Walaikum Assalam. Walaikum Assalam. Walaikum Assalam. Assalamu alaikum to everybody. In the previous class, we are discussing about the first law of thermodynamics. We have applied different processes and then we have calculated the expression for amount of work done in case of irreversible process, isothermal irreversible. Then we have said one special point that delta H is equal to 0. And then we have taken isothermal reversible process. Isothermal reversible process. For that purpose also we have derived one expression yesterday. All right. Derivation, if you are able to enjoy, it's okay. But if suppose you are not able to understand the derivation part, nothing to worry. Just remember the expression because we are going to use expression. We are learning for competitive examination, that is important. But for those students who belong to Excuse me, sir. IIT Your set, volume is very low, sir. go ahead. Come on. Now, once till this point we have discussed yesterday, and we said that it is in an isothermal expansion as a number of steps increases, the amount of work done also increases. Now, when you are saying isothermal, remember one thing. When I am saying that isothermal expansion, it can be irreversible, it can be reversible. When you are saying it is irreversible process, you can do it in a finite number of steps. Finite number of steps. Okay. Suppose, for example, if you are increasing the number of steps slowly, 10, 20, 30, 100, 200, if you are goes on extending it, then it becomes a reversible process which consists of infinite number, a large number of steps, and because of that we can say, sir, we are having more amount of work done, right? But if you are going from this to that, when you say the word, as you increase the number of steps, amount of work done increases. This is already proved yesterday that if it is reversible process, we have maximum work. What is the meaning of reversible process? A large number of steps, a very large number of steps, right? Let us try to understand this. In trying to do so, we are having number of questions possible. I am actually trying to explain one concept, but that concept explanation method consists of number of questions. Take care of that. Come on, what we have said here, one more thing, see that work reversible isothermal expansion, isothermal expansion, isothermal expansion, but it is reversible, it is irreversible. Why? Irreversible means less number of steps, reversible means a large number of steps. Therefore, in case of expansion, listen to that carefully, only in case of expansion, if you are increasing the number of steps, remember, amount of work done increases. What is the meaning of amount of work done? Not number line, -1 is more than -2. No, magnitude of work. We are discussing about magnitude of work. Always the quantity of work done will be more if you are having expansion, point number one. Number two, more number of steps, more amount of expansion work. Okay, sir, we are accepting it because you are saying, but can you please prove that one? As a science student, you can ask, sir, okay, you are saying if you increase number of steps, amount of work increases. How do you proceed in mathematical way? Yes, I am having two methods to explain this point. One is mathematical way and one is graphical method. Work of expansion in a single step. Recall that student who came to our classroom and removed all 100 marbles in one stroke. What he has done? He has done the work in one single step. At that time, I said the piston will bump up and process will be fast. But now I am saying work done will be less.
work done will be less. When second student comes and he's removing 50 marbles and then 50 marbles, work done will be more. What your mind is thinking, sir, anyhow we are doing 100 marbles only, right? In the first case, we have removed 100. Second case, we are doing 50-50. Third case, 25-25-25. Are you talking about change in number of marbles? No. Therefore, your mind may say, common sense says that work should be same. No. As you increase the number of steps, remember the amount of work done is increasing. Okay. Let us try to enjoy that process. I have taken, I have taken P1 as 10 atmospheres, V1 as 1 liter. This is called initial state. I am going to final state. P2 is equal to 1 atmosphere, 10 to 1, suddenly 10 to 1, all marbles removed suddenly. V2 is equal to what? 10. Why it is so? Isothermal process we are discussing. Therefore, P into V must be constant. 10 into 1, 1 into 10. PV is constant in case of isothermal processes. Come on. What is our job? Our job is rule number 1. Our job is, sir, I have removed the pressure suddenly from dash to dash, and that I have done in single step. Find the amount of work done. Very simple. Amount of work done is equal to minus P external delta V. Come on. This is the job he has done. Suddenly from P1 V1 to P2 V2. Okay. Now, this is the graphical representation. Single step. Take care of the graph also. Work expansion isothermal is equal to formula minus P external delta V, right? Come on, minus P external. What is P external? Sir, 10 atmosphere, 1 atmosphere. Tell me, this volume change is responsible because of what? Because of final pressure. Yesterday also we have discussed this point. Always deciding factor is final pressure, P2. Therefore, this is taken as external pressure. Who is responsible to make the volume? 1 to 10 liters. So P external is 1. This minus is from the expression formula. 1 into V2 minus V1. Final minus initial, not higher minus lower. Right? This is 10th time I think I am saying. Never. Delta E in thermodynamics, final minus initial. Whether it is less or more, I don't care. I say final minus initial. 10 minus 1 minus 9. What are the units? Pressure, atmosphere, volume, liters. Liter atmosphere, it is also one of the unit of work done. Which work? Mechanical work. Which work? PV work. PV work is given liter atmosphere. So we don't accept it, sir. We want either CGS system or SI units. Liter atmosphere is none of them. It is a practical unit of work done. Change it. How to change? Multiply by 101.3. Remember this number, right, doctors? Instead of multiplying by 101.3, you can also multiply by 100 so as to save your time. And that is actually correct when it is liter bar to joules. Liter bar से joules को लाना है, multiply by 100. Liter atmosphere to joules multiply by 101.3. लेकिन हम लोग 100 से multiply करके we check up the nearest question, nearest option. No, sir, I want to talk in terms of calories. Option में calories हैं, तब ये number याद रखिए. All these are shortcuts to remember conversion because no one will talk in terms of liter atmosphere because work is a form of energy. Energy must be either in terms of ergs or in terms of joules or in terms of calories. Ergs nowadays outdated. It is 1947 love story. No one is taking care of that one. So work is this one. Achha, what is the magnitude of work? 9. Remember that. Whenever you are trying to compare, we should talk magnitude. What is this minus? Nature of work. What is the nature of work? Expansion, compression is nature of work. Work done by the gas, minus. Work done on the gas, plus. So we are talking about expansion. Okay. चलिए ये क्या था? Single step की story थी. Now ask to roll number 2. What he said? 50 marbles in first stroke, 50 marble in second stroke. वर्क ऑफ एक्सपेंशन इन 2-स्टेप प्रोसेस. चलिए यहां से जाना है 10 to 1, लेकिन रोल नंबर 2 10 से 5 को जाएगा, 5 से 1 को जाएगा. रिमूव तो वही करना है 100 मार्बल्स. इन फर्स्ट स्टूडेंट हमको आना है 10 से 1 तक ही, लेकिन पहले 10 to 1 सडन. नो 10 to 5, 5 to 1, 10 to 2.5, 2.5 to 1.25, 1.25 to 1, like that if you are increasing the number of steps. चलिए P1 10, V1 1 liter, P2 5, V2 total 10 into 1.
Therefore, phi into 2, because isothermal process, PV remains constant. Final P3 V3 1 into 10. चलिए अब how to do work? Very simple sir. 2 step. W1 यहाँ से यहाँ तक, W2 यहाँ से यहाँ तक. Total amount of work done is sum. If it is irreversible process, right? Remember, this is a question. If it is irreversible process, total amount of work done is sum of all the processes. एंड इफ इट इज रिवर्सिबल बाद में बात करेंगे, इंटीग्रेशन करना पड़ता, कल सीखे थे आप. चलिए कैसे करें आप, ऐसे करें. पहले ऐसा सिचुएशन था, थोड़ा सा पिस्टन उठाए, फिर थोड़ा सा उठाए. फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप, वन बाय वन. यू हैव डन इन 2 स्टेप्स. यहाँ क्या करें, सडनली फ्रॉम हियर टू हियर इन द फर्स्ट केस. नाउ फर्स्ट केस टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड. W total W1 plus W2. ओके, W1 मतलब यहां तक आना है. फाइनल प्रेशर एक्सटर्नल 5 माइनस, ये तो आपका फॉर्मूला है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी 2 माइनस 1 प्लस ये प्लस माइनस, कौन सा माइनस है ये, पी एक्सटर्नल का माइनस 1 फॉर सेकंड स्टेप विच इज आउटसाइड एक्सटर्नल प्रेशर, फाइनल प्रेशर 1, फाइनल वॉल्यूम 10 माइनस 2 minus 1, 1 into 5, minus 5, 10 minus 2, 8 into 1, 8, minus 5 and minus 8, minus 13 liter atmosphere. देखो मैग्नीट्यूड यहाँ था 9, यहाँ है 13, राइट. अब ये डबल स्टेप में है, यहाँ से यहाँ पे आना, यहाँ से फिर यहाँ पे आना. ये एरिया और ये एरिया अभी समझ में नहीं आएगा, जब नंबर ऑफ स्टेप्स और बढ़ाऊंगा आपको फिगर समझ में आएगा. हियर वी हैव मोर अमाउंट ऑफ वर्क. कितना ज्यादा है, देखो इतना वर्क ज्यादा है. यहाँ पहले कितना था, इतना ही था. ये जो है ये रेक्टेंगुलर बार ये दिख रहा है, ये दिस इज फर्स्ट वन. नाउ वी आर हैविंग सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क, सो मोर अमाउंट ऑफ वर्क इज डन. टेक डाउन दिस, देन वी विल प्रोसीड. गो अहेड. No confusion is there, beta. Read it once systematically. There is no confusion. Confusion कुछ भी नहीं है. Concentration required. There is no word here in geothermal. There is no one is written as geothermal here.
draw the figure systematically and think over it. Is it over? You have to start from here. Yesterday we have came up to this violet one. You have to start from here and then go ahead systematically. Go ahead, no problem. Right now, right now. Today we have only equations and all to learn. Basically, whole conceptual discussion is available today. So go slowly, no problem. Write it down. We can extend the class somewhat, but today we have to finish because tomorrow exam portion is till today covered. We don't have time, Mohit. We don't have time to explain again and again. Please take the notes and read it. Sorry, but I want to help everybody, but I don't have time because of you people only. Most of your close and decent friends disturbed the whole classes number of times. Even though I have kept my patience alive, now it's not possible because already we have wasted so much amount of time because of generous and polite people. Go ahead, take down this, then we'll think of about take down first this one, take it. Concentrate on that one instead of writing so many things that you are absent and ID was not available. Concentrate on that screen and write down. Slowly we can learn, right? In the next step screen also, I'll explain some more things so you can connect it and you can understand that much. Yes, you can do it. No problem, no problem. I can't go back. Go ahead. I am saying that it is possible if you are involving, it is possible. You are reluctant, you are saying, I cannot understand. You cannot understand. If you say, yes, sir, I'll try because I am going one more step, I'll do and then I'll explain. You can connect that explanation to this and you can go it. Yes, I'm trying for that. Okay, right. In the figure, he has taken T1, T2, T3, but I have not written T1, T2, T3, but I have said isothermal. उतना आप समझना है कि वो figure में वहाँ पे आया है. That is not my figure, made figure. I have taken from systems, right? Isothermal का मतलब सब same है. Is it okay? ध्यान दिया करो, ध्यान दिया करो. पेन टैब पे ड्रा करने थे इतने सिस्टमैटिक
concentrating figure nahi aate hain, so we have taken from net and that is written. We don't use that one. We say okay, I got it sir, isothermal, finished, that all. Okay, shall I proceed? Is it over? Take care of the graphs, take care of the graphs properly. Go ahead, those who are not finished, go ahead, go ahead, please, fastly, do fastly. Whatever today it's over, I'll complete, but questions I have framed till my completion of the whole class. अगर वो नहीं ले सका मैं तो क्वेश्चंस तो आएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा काम तेज कीजिए, अननेसेसरी चीजों में ध्यान मत दो, काम तेज तेज करो, हो जाएगा, ठीक है? अनस, हरी अप. Come on, now moving to the other one, I'm going back again. In step 1, we have changed from 10 to 1. Final pressure is 1 atmosphere. P external, V2 minus V1. 2 steps, right? P external, P1. P external is taken in between first step to second. Then final step, 2 steps, W1, W2. We are finding that as I'm increasing the number of steps, amount of work done in expansion is increasing. It's all expansion process. Chaliye. Next. Suppose, for example, if you are further increasing the number of steps, you can expect, sir, W1 plus W2 plus W3. Suppose, for example, if I am having that one. However, try to understand this in this manner. Work of expansion in 3 steps. ठीक है? अब ये नंबर गेम नहीं लिया मैं यहाँ पे, that is your job. घर पे आप क्या कीजिए? What we have done, sir, we are going from 10 atmosphere to 5 to 1. अब क्या करेंगे? 10 to 7.5, 7.5 to 5, 5 to 2.5, 2.5 to 1, 4 steps. I have taken third step. पहला step, here we are having one area, second area, third area. This whole area is known as W1 plus W2 plus W3. This is known as total amount of work done in 3 steps. That will be more than the work done in the first step. ये figure to connect करने, ये figure देखिए, यहाँ देखो. Here what we have said, we are having 2 steps. Single, यहाँ से यहाँ तक एक था, फिर ये extra. यहाँ पर single, देखते जाइए, bars, rectangular bars, how we are increasing that one. Therefore, the amount of work done will be sum. W1 full stop. W1 plus W2, area is more. Here in this case, we are having W1 plus W2 plus W3. Now, in an isothermal expansion process, as number of steps increases, the amount of work done also increases. This graph is saying that total area of this graph is more than the previous graph, more than the previous one graph. Okay, chaliye. Suppose, for example, you want to conclude this line is 4 marks question, doctors. Work done, expansion work done, reversible process, formula minus Px on delta V. Whereas expansion work, but we are having irreversible process, right? यहाँ गलत हो गया, देखो गलत हो गया, right? When you are doing this one, please make correction. मैं इसको बाद में करके बताता हूँ, थोड़ी देर से पहले एक्सप्लेन करें. अब यहाँ पे आइए, तो थोड़ा दिमाग से इस फिगर को मैं ज्यादा टाइम दूंगा, तो ध्यान में देखिए. ये जो वर्टिकल ब्लू बार है, ये स्टेप 1 है. सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, 5 स्टेप. नाउ आई एम इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्टेप्स. एज यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्टेप्स, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन. ध्यान से सुनो, रेक्टेंगुलर बार सिर्फ इतना लेना है. ये ऊपर जो व्हाइट स्मॉल रेक्टेंगुलर पार्ट, ट्रायंगुलर पार्ट है, वो नहीं लेना है. दिस हिस्टोग्राम बार, द ब्लू बार, बार B1, B2, B3, ये ऊपर थोड़ा थोड़ा छोटा देखिए, वो छोड़ दीजिए. So you have to add the total area of this rectangular bar, B1 plus B2 plus B3 dash 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 B infinity. How many? We don't know. Therefore, whenever we are having
increase in the number of work steps. Remember, total amount of work done is equal to sum w1 plus w3 plus w2 plus 3 plus 4 plus dash dash 20 plus dash dash 100, like this. No sir, I have taken infinite number. तब क्या करेंगे, ऐसा लेते ग्राफ, ये जो लाइन आ रही है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप की, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन. ये एरिया अंडर this curve is called as total amount of work done, whereas this work is work done. This is total work, blue bars, irreversible. Total work done under this line. तो क्या एक्स्ट्रा आएगा, ये जो व्हाइट रेक्टेंगुलर स्मॉल पोर्शंस आ रहे हैं, ये एक्स्ट्रा आएगा, ये एक्स्ट्रा आएगा. जितना एक्स्ट्रा नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे उतना एक्स्ट्रा पोर्शन एड अप होगा. दिस मीन्स टू से टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन. यहाँ पे आइए जरा समझ में जल्दी आएगा. ये तीनों का शेडिंग जो है ग्रे कलर, दिस इज वर्क डन W1 प्लस W2 W3. व्हाट अबाउट इफ इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, ये लाइन के नीचे का पूरा लाइन के नीचे का जो एरिया आएगा, कंप्लीट दैट येलो प्लस दिस ग्रे होल, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल वर्क डन. रिवर्सिबल वर्क डन इज टेकन बाय इंटीग्रेशन, राइट, पूरी लाइन. whereas irreversible is ये बार फिर ये बार फिर ये बार. सर कुछ छूट रहा है ऊपर का, यस, वो इंक्लूड होगा रिवर्सिबल में. इरिवर्सिबल में काम कम होगा, रिवर्सिबल में काम ज्यादा होगा. ठीक है, नेक्स्ट. इन एन आइसोथर्मल कंप्रेशन, अब यहाँ दिमाग की बात है, ये एक्सपेंशन का हिस्सा चल रहा था, कंप्रेशन में बिल्कुल उल्टा होता है, उसका बिल्कुल उल्टा होता है. आज क्या करना है, इवनिंग घर में बैठ के फर्स्ट एग्जाम्पल लेना. फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या किया मैं, 10 to 1. आई विल गो बैक. 10 to 1. आप क्या करो, इसको उल्टा करो. P1 is equal to 1 atmosphere, volume is equal to 10 liters. P2 is equal to 10 atmosphere, volume is equal to 1. इसका उल्टा लिखिए, फिर कैलकुलेट करो प्रेशर. सेम थिंग, माइनस P external. जब P external क्या बनेगा, 10 बनेगा, इंटू V2 माइनस V1. V2 क्या बनेगा, 1. V1 क्या बनेगा, 10. 1 माइनस 10 माइनस 9. ऑलरेडी हमारे पास एक्सप्रेशन माइनस है, माइनस ऑफ माइनस प्लस 9 आएगा, प्लस 9 आएगा, राइट. चलिए, वो आपका काम है कंप्रेशन में. मैं कंक्लूजन लिख दे रहा हूं इसका. In an isothermal compression process, as number of steps increases, amount of work done decreases. यहाँ देखो, यहाँ decreases बोले, यहाँ पे increases. In case of expansion, increases. How it increases? I have given you mathematical example. I have given you graphical representation. Right? Confusion होता है, होगा. First time confusion होगा. आराम से कूल रहना. कंफ्यूजन हो रहा बजाय इसके कूल. ठीक है सर, घर में फिर अब बैठ के खोल के क्या क्या बोले, स्टेप 1 में क्या हुआ, स्टेप 2 में क्या हुआ, स्टेप 3 में क्या हुआ. अगर ऐसे ही स्टेप्स बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, ब्लू 1, ब्लू 2, ब्लू 3, ब्लू 4, ऐसे कितने ही आएंगे सर, बहुत सारे आएंगे. लेकिन उन सब के पीक्स को मैं ज्वाइन किया तो कुछ पार्ट एक्स्ट्रा मुझको मिल रहा है. ऑल दैट एक्स्ट्रा पार्ट इन द होल ग्राफ. ये सर कर देखो, कर्सर देखो आप, फ्रॉम हियर टू दिस लाइन टू दिस लाइन टू दिस लाइन, ये होगा वर्क रिवर्सिबल. ऐसे ही अब और एक बार आएगा, और एक बार आएगा, ऐसे रेक्टेंगुलर ब्लू बार्स आएंगे यहाँ तक. ये पूरा वर्क W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W100 डैश डैश डैश, ये होगा irreversible work. Therefore, in case of reversible processes, as you increase the number of steps, we go from irreversible to reversible. Therefore, work done, कौन सा work done, expansion work done increases. If you repeat the same sentence in case of compression, it will decrease. This is your challenging work. Sir, how it will decrease? How? I have to show it. I want to know it. Sit at home, enjoy the game by taking example. Same example what I have given. Only do first step, second step. दो में समझ में आ जाएगा. चलिए next. If suppose for example you are having reversible processes, then हाँ यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, होमवर्क इज वर्क ऑफ कंप्रेशन. इसको जरा ध्यान से कीजिए, स्पेशली डॉक्टर्स, आईआईटी पीपल दोबारा फास्ट कर सकते हैं, राइट, इफ यू टेक इंटरेस्ट. नाउ आई एम ट्राइंग टू टेक अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर दोज हु आर सेइंग कंफ्यूज्ड है, समझ में नहीं आया. देखिए, ये नंबर्स की मतलब मत जाइए, नंबर्स कुछ और लिया है नेट वाला, मैं कुछ और ले रहा हूँ. मुझको नंबर्स नहीं देखना है, मुझको क्या देखना है, एक्सपेंशन. ये कौन सा है, सिंगल स्टेप. ये कौन सा है, 2 स्टेप. देखो शेडेड एरिया बढ़ रहा है या कम हो रहा है. ये कितने स्टेप, 1 2 3 स्टेप.
राइट। ये जो एरिया है इसको कहते हैं रिवर्सिबल, पूरा कर्व के नीचे का। जबकि इसमें देखो ये छूट रहा है, मैं यहाँ जब बता रहा था आपको, जी ट्रायंगुलर पार्ट, स्मॉल ट्रायंगुलर पार्ट इज मिसिंग, ये मिसिंग पार्ट एक्सपैंड करके ऐसा बता सकते हैं आप, दिस इज मिसिंग पार्ट। ये कब की बात है? एक्सपेंशन की। एज यू आर गोइंग डाउन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इंक्रीजिंग। डोंट टेक दीज नंबर्स, हम नंबर अपने हिसाब से लेंगे। क्या लिए थे? 10:1, उसको आप कितना भी बाइफरकेट कीजिए। कंप्रेशन में क्या होता है, ये देखो शेडेड एरिया बाहर जा रहा है और ये जो लाइन है वो अंदर आ रही है, राइट। इसका मतलब है दिस एरिया, shaded area is for steps, irreversible. The curved area, under the curve area is work done in case of reversible compression. ये reversible compression है, ये irreversible compression है, right? फिगर ड्रा करने के लिए पेंसिल, स्केल, सिस्टमैटिकली। ये नंबर्स मत लिखिए, नंबर्स मत लिखिए, नंबर हमारे हैं 10:1 और 1:10, ठीक है। गो अहेड, go ahead, go ahead. There is one good question here by Muhammad Abrar. Reversible expansion and compression magnitude of work is same? Yes, that is your question. You have to answer that. कब आंसर करेंगे? आज शाम में आप बैठ के करके देखेंगे एग्जाम्पल, उसके बाद मुझको बोलेंगे सर क्या होने वाला है, ठीक है। अबरार का थिंकिंग ऐसी है कि सर मैं प्रेशर जैसा आप बोले वैसे चेंज कर दिया, 10:1, 1:10 कर दिया, तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा क्या? वो शाम में करके देखिए, फिर एंजॉय करो, मजा आएगा। I did not understand compression, no problem बेटा, होमवर्क अंडरस्टैंड करने की जगह घर है बेटा, आपको करके पहले ये पूरा अच्छा पढ़ना पड़ेगा, शाम में पूरा पढ़े के बाद इसको आप समझेंगे रिवर्सिबल एक्सपेंशन को, तो कंप्रेशन समझ में आएगा। कब समझ में आएगा कंप्रेशन? जब आप 2 स्टेप का एग्जाम्पल और 1 स्टेप का एग्जाम्पल प्रैक्टिकली अपने हाथों से करेंगे, आंसर आएगा, आंसर का नंबर जब देखेंगे तब आपका माइंड एकदम खुलेगा, अच्छा ये है स्टेप का मेथड, राइट। उसके बाद ये ग्राफ समझ में आएंगे, बिकॉज अवर माइंड विल एक्सेप्ट नंबर्स इजीली। तो पहले आप नंबर से करो, जैसा हम स्टेप्स वाइज करें ना, वैसे आप भी करो, उसके बाद यस यू कैन एंजॉय दैट वन, बिकॉज यू पीपल आर जीनियस। टेक द ग्राफ्स। अच्छा यहाँ पे गलती है, देखो ये टाइपो मिस्टेक है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन रिवर्सिबल, ये फार्मूला इधर आना, ये फार्मूला इधर आना, प्लीज सही लिखो। एक काम करो, ये मत लिखो, ये मत लिखो, मैं एक काम करता हूँ, जरा गलती करेंगे आप लोग तो परेशानी होगी, इसको मैं निकाल लेता हूँ। वेरी गुड, आप लिखिए। चलो ये जो राइट साइड में फिगर्स हैं, इसके नंबर्स मत लीजिए, डोंट टेक दीज नंबर्स। आवर नंबर इज 10:1, उसको आप कितना ब्रेक करना है ब्रेक कीजिए। 10:1 सिंगल स्टेप, 10:5 5:1 2 स्टेप, 10:7.5 7.5 to 5, then 2.5, then 1, 4 स्टेप करके देखिए। जितना आप स्टेप बोल रहे सर मुझको समझ में नहीं आया, उतने स्टेप्स बढ़ के काम ज्यादा करके देखिए कैसे समझ में आएगा, then you can understand it.
P external is always taken as 1 beta. Remember, not sorry, not 1. P external is always final pressure. Final pressure. Second step में final pressure क्या है वो देखो, वो लीजिए, right? मोहम्मद अनस सर, some noise is coming. मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, माफ़ी चाहता हूँ। ये हम लोग, मैं मुसलमानों के महल्ले में हूँ, ये मेरी शर्मिंदगी है मेरे लिए। जब से लॉकडाउन है, जब से यही मुसीबत है। मेरा इत्तेफाक से मेरा स्टडी रूम मेरे ड्राइंग रूम में है, और ये बच्चे हमारे माशाल्लाह से सुबह से शाम तक ऐसा ही करते हैं, क्योंकि इनकी फाइनल लाइफ या तो टैक्सी ड्राइवर बनेंगे या तो ऑटो ड्राइवर बनेंगे। बेटा सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प। कल था, मैं राजमंड्री में था, नॉन मुस्लिम की बस्ती में था, नॉन कॉलेज में था, खामोश, पिन ड्रॉप साइलेंस रहता, वहाँ पे काम होता है, यहाँ पे चलिए चलिए, नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए प्लीज। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन देम, बट कितने खूबसूरत है बच्चे इसी उम्र में कि जब समझाए उसके बाद में ज्यादा करते हैं, और मेरी कार पे पत्थर डालते हैं या दरवाजे पे मारते हैं। जैसा आपके क्लास में कुछ आते हैं ना, वैसे ये लोग अभी से वैसे तैयार हो रहे हैं, बिकॉज दिस इज courtesy ऑफ लॉकडाउन एंड कोरोना। Because of corona, non-Muslim students are getting ranks because they are working more. Because of corona, our students are getting less and less marks because they are saying, okay sir, we are not studying at home because we are unable to understand. Allah Malik. Shall I proceed? Shall I proceed? Is it over? किसी को ये राइट साइड के ग्राफ में और ये ग्राफ में तकलीफ हो रही है, टेक स्नैपशॉट, स्क्रीनशॉट लेके रखो, बाद में ड्रा करो। ये बुक में, नोटबुक में होना कंपलसरी है। ये जो गैप्स हैं, ये गैप्स जरूरी है समझना। इसके और इसके अंदर में फर्क क्या है? दिस इज लेस, दिस इज मोर। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस एक्सपेंशन इज मोर एंड इरिवर्सिबल एक्सपेंशन लेस। कितना मोर, कितना लेस? यहाँ जो ट्रायंगल्स हैं, यहाँ ट्रायंगल्स अच्छा समझ में आ रहे हैं आपको, राइट? इसके अंदर ट्रायंगल छूट रहा है, ये ट्रायंगल और बार बाहर जा रहा है। दिस इज मोर। कंप्रेशन में स्टेप्स बढ़ाएंगे तो वर्क घटेगा, एक्सपेंशन में स्टेप बढ़ाएंगे तो वर्क बढ़ेगा। शैल आई मूव? इज इट ओवर? ओके, गो अहेड, गो अहेड, गो अहेड। सईदुर रहमान, थोड़ा तेज कीजिए बेटा। रहमान हो गया? सईदुर रहमान, एवरीवन इज वेटिंग फॉर यू। ओके, नाइस, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, अब आगे आइए। आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। ओके ओके ओके, आई हैव डन होमवर्क आल्सो हियर। चलो ठीक है, आपके किस्मत अच्छे हैं। 1 atmosphere 10 liters। कौन पूछ रहे थे? I am now unable to understand the compression. Yes, that boy, I don't know the name. देखो बेटा यहाँ पे 1 atmosphere 10 liters, 10 atmosphere 1 liter, 1 atmosphere 10 atmosphere, you are increasing the pressure, volume is decreasing, compression। देखो क्या हो गया, W is equal to minus P external delta V is equal to minus outside pressure। जो लोग डाउट्स पूछ रहे हैं वो लोग यहाँ देखते जाइए, राइट? इस वास्ते बोलता हूँ डाउट पूछने की जगह थिंकिंग करना। देखो P एक्सटर्नल 10 डेल्टा V फाइनल, सर छोटा है, नो नो नो, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू 1 minus 10 minus 9 minus f minus plus 90। एक साहब पूछ रहे थे मैग्नीट्यूड, देखो वहां कुछ और था, यहाँ कुछ और है। इसका मतलब हमारी तरफ से अननेसेसरी अजम्पशंस नहीं करना,
वो एनर्जी स्टोर करके काम में लगाना। W टोटल अगर 2 स्टेप करे तो 50 लीटर एटमॉस्फेयर क्या हो गया, देखो ये वैल्यूज आपके होमवर्क में आने वाले थे, लकीली अभी आ गए। सो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज पॉजिटिव हियर, मैग्नीट्यूड इज 90, मैग्नीट्यूड इज 50। as you're increasing the number of steps, amount of work done decreases in case of compression, increases in case of expansion। graphically if you want to understand, यहाँ पे देखो ये जो ऊपर का कर्व है वो रिवर्सिबल के लिए है, बार्स इरिवर्सिबल के लिए है। ये जो व्हाइट एक्स्ट्रा ट्रायंगुलर पार्ट है ये कर्व में एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, whereas यहाँ कर्व में ये एक्स्ट्रा छूट रहा है, राइट। ये देखो सिस्टमैटिकली इसको ड्रॉ करके टाइम वेस्ट मत करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 मिनट पहले कितना है ये स्क्रीन पे, क्या क्या है देखो पहले, और कुछ है, यस उसी स्टेज को फिर से लिया हमें, कंप्रेशन को। यहाँ लिखा हुआ है वर्क आइसोथर्मल एक्सपेंशन रिवर्सिबल इज मोर, यहाँ सही लिखा हुआ है देखो, work isothermal expansion reversible is more, work isothermal expansion irreversible is less। कंप्रेशन में उल्टा है देखो, आइसोथर्मल कंप्रेशन में काम कब ज्यादा होगा, रिवर्सिबल में। रिवर्सिबल का मतलब स्टेप्स ज्यादा होंगे तो काम ज्यादा कम होगा, रिवर एक्सपेंशन में जितने ज्यादा स्टेप्स होंगे उतना ज्यादा काम होगा। कंप्रेशन करना है तो उसका उल्टा लिखना, ठीक है। और कुछ है स्क्रीन पे नहीं है, चलिए ये दोनों के फोटोज ले लीजिए। ये तो खैर ऑलरेडी आ चुका है, इसकी जरूरत नहीं है। ये आइसोथर्मल 6 एग्जाम्पल पूरा लिखो, जिन जिनका डाउट था वो खत्म हो गया, एंड जिनका होमवर्क था वो भी हो गया। अब होमवर्क में क्या करना है, बजाय 2 स्टेप के 4 स्टेप करके देखो, उसमें भी करो, एक्सपेंशन में इसमें भी करो, देखो क्या कंक्लूजन आएगा, अमाउंट मैग्नीट्यूड क्या होगा। जो ये पूछ रहे थे कि रिवर्सिबल और आइसोथर्मल कंप्रेशन और एक्सपेंशन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड भी कंपेयर कर लीजिए। ऑल डाउट्स are over because homework is over। I want to actually give you a work but I don't know, मैं कर दिया already। चलो ठीक है, enjoy that। go ahead, take graphs, photograph, and remaining things please write down, don't waste your time। I have to cover one more topic today, 3:30। how many of you are having class today? Any batch is having JL40, JL41 and doctors 3:30 इसकी क्लास है? No, from 4, okay 4 is better। we are having physics at 3:30। कौन है ये? JL40 वाले हैं, ऊपर वाले बोल रहे हैं कि 3:30 से है, नीचे वाले बोल रहे हैं कि नो मोर क्लासेस टुडे सर फॉर JL40। क्या बेटा, अरशद का सेंटेंस अलग है और अब्रार का सेंटेंस अलग है, बोथ आर हैविंग सेम JL40 है। चलो ट्राई करेंगे, मेरा अगर हो गया तो मैं खत्म कर देता हूँ, शायद मुझको 10-15 मिनट एक्स्ट्रा मिलने चाहिए। शैल आई प्रोसीड? टेक द फोटोग्राफ्स ऑफ द ग्राफ। कल का पेपर बहुत ब्यूटीफुल है, राइट। आई हैव टेकन टुडे 3 hours टू प्रिपेयर दैट पेपर, क्योंकि ऑलरेडी मैं लास्ट वीक पेपर दिया था, उसी कंटेंट पे फिर पेपर बनाया हूँ, वेरी ब्यूटीफुल। ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल ट्राई टू फिनिश बेटा, अब्रार आई विल ट्राई टू फिनिश अप टू 3:30, नहीं तो थोड़ा सा 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि वो ख़त्म नहीं किया तो आप कल के क्वेश्चंस में शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। फिजिक्स सिलेबस इज ओवर, जूनियर फिजिक्स सिलेबस इज ओवर। इट इज पॉसिबल, फिर मालूम है, आई नो इट बेटा, ये नो बोल के बोल रहे हैं, फिर नहीं। सम ऑफ यू आर सेइंग यस सिलेबस इज ओवर। अच्छा एम्स का नहीं बेटा, एम्स का नहीं। When we are talking about JL40, गिरी सर जहाँ पे ले रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं कि रिवीजन बोल के लिखे साहब, ऐसा कैसा होता बेटा, सिलेबस इतना जल्दी कैसे खत्म होता। खैर चलो, अल्लाह मालिक, unnecessary why I should talk about that। Shall I proceed? Is it over? Yes, right, come on। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट यू शुड सिट। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स है, सब है पूरा, थर्मोडायनेमिक्स की हेडिंग से लेके आज शाम में जहां तक पढ़ाऊंगा सब है पूरे का पूरा। कम ऑन,
Next. Now, there is one more discussion here in this case called CP and CV. This is topic of physics, but we need it, therefore I am taking it to account. I'll go slightly faster here. हमको इसका सिर्फ मीनिंग समझना है. CPC, this is called heat capacity. और से सुनो, कॉन्सेप्चुअल है, ब्यूटीफुल समझ में आएगा. हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी वर्ड से कुछ मालूम हो रहा है कि किसी भी बॉडी के अंदर हीट एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी कितनी होगी, शायद इसके बारे में डिस्कशन होगा. Yes, heat capacity is defined as the amount of heat energy required to increase temperature of a body. कौन सी body? I don't know. कितनी body? I don't know. What definition says? It is the amount of heat energy. सर कुछ body रखी हुई है एक जगह पे, कोई भी है, solid है, liquid है, gas है, solid के लिए ले लो चलो, उसका कुछ टेम्परेचर है, चलिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड. अब you are supplying heat energy to that one, right? Heat capacity is defined as the amount of heat energy required to increase temperature of a body through 1 degree. 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 बनाने के लिए कितनी एनर्जी देनी चाहिए, रिक्वायर्ड होगी. That amount of energy is called as heat capacity, right? Listen and understand carefully. Again, I am repeating, the amount of heat energy required to increase temperature of unit mass, नहीं बोला मैं, specific body नहीं बोला, a body, but through 1 degree centigrade is called as heat capacity. चलो ठीक है. Rule number 1 is doing this process by maintaining constant pressure. अब क्या बोलेंगे? Heat capacity at constant pressure. Rule number 2 is maintaining constant volume. वो पिस्टन को स्क्रू लगा देके कर रहे हैं, वॉल्यूम पिस्टन ऊपर नीचे नहीं होना है सर, वॉल्यूम कांस्टेंट. अब क्या बोलेंगे? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीपी सीवी. ठीक है. अगेन आई एम डिफाइनिंग दैट. सपोज इफ यू आर सेइंग नो, अब डेफिनेशन में चेंज क्या कर रहा हूं वो जरा कैच कीजिए. अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ ए ग्राम ऑफ ए बॉडी, 1 gram of a body through 1 degree centigrade is called specific heat capacity. Why you are saying specific, sir? We have taken specific quantity, 1 gram. CGS system, 1 kilogram, MKS, SI units, right? First definition, a body through 1 degree centigrade. Second definition, a gram of body, a kilogram of body through 1 degree centigrade. वो 1 degree बराबर है. अच्छा. Third definition, sir, we are not in physics class, we are in chemistry class. The amount of heat energy required to increase temperature of a mole of substance through 1 degree is called molar heat capacity. Yes, जहां इंटेंसिव में आप डिफाइन कर रहे थे, ये चीजें आए थे वहां पे. अब डेफिनेशन आ रहा है, मोलार हीट कैपेसिटी कैपिटल सी लिखते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी लिखते हैं. Molar heat capacity is defined as the amount of heat energy required to increase temperature of 1 mole of a substance from 25 to 26. No sir, 45 to 46, anything through 1 degree. अब ये 1 degree में सेंटीग्रेड नहीं बोलना, समझाने के लिए शुरू में बोला, अब बोल रहा हूं कि नहीं बोलना. क्यों सर? 27 डिग्री सेंटीग्रेड सपोज आपको बोला मैं, तो केल्विन कितने होंगे? 300. 127 डिग्री सेंटीग्रेड बोला तो केल्विन कितने होंगे? 400. दोनों का डिफरेंस उतना ही होगा. इसका मतलब रिमेंबर, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल आर मीनिंगफुल व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग इंडिविजुअल टेम्परेचर. 27 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह पे आपको लिखना है 300, वो सही है. बट व्हेन यू टेक डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, 127 minus 27, 100, 400 minus 300, 100. Therefore, जहां डिफरेंस इन टेम्परेचर आया वहां पे यूनिट्स का सिग्निफिकेंस चला जाता है. दिस इज द कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ टेम्परेचर, ओके, नॉट इन अदर केसेस. Therefore, I am redefining again. Molar heat capacity is defined as the amount of heat energy required to increase temperature of 1 mole of substance through 1 degree, full stop. सेंटीग्रेड नहीं बोलना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता, केल्विन भी हो सकता. चलिए, heat capacity is the amount of heat energy required to increase the temperature of a certain mass. कितना? I don't know. Of certain substance, I don't know, through 1 degree. चलो ठीक है. Specific heat capacity, small c, is the amount of heat energy required to increase the temperature of unit mass, 1 ग्राम, 1 किलोग्राम, जिस सिस्टम के ऊपर डिपेंड है, थ्रू 1 डिग्री. देखो डिग्री लिखा हुआ है, केल्विन सेल्सियस नहीं लिखा.
आगे बढ़िए, मोलार हीट कैपेसिटी कैपिटल सी, it is the amount of heat energy required to increase the temperature of 1 mole of a substance through 1 degree. ये है anything, ये है 1 ग्राम, ये है 1 मोल. इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़िए. CV, ध्यान से, molar heat capacity at constant volume. Now I am going to depth of thermodynamics first law. CV, molar heat capacity. V का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट. अच्छा, अब डेफिनेशन क्या बोले थे अभी आप? सर डेफिनेशन में ये बोले अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड Q to increase temperature by 1 degree by delta T. Q by T. Q by T. That is the discussion. Okay. अब आप देखो, CV is equal to Q by T. dq, how much amount of energy you are supplying? Small amount of energy. Then in dt, how much is change in temperature? What is n? Per mole. अगर पर ग्राम रहा तो यहाँ पे Wm आएगा. M mass 1 gram. If m is equal to 1, dq by dt. If n is equal to 1, dq by dt. And what is this V? Constant volume. Go back to previous classes, thermodynamics. What you said, dq, qv is nothing but change in internal energy. Qp is nothing but change in enthalpy. Recall the previous things. dE by ndt. इसी वजह से आप लिखे थे delta E is equal to NCV delta T. Any one of you can recall that formula? You have written earlier. जब मैं बोला था आगे समझाऊंगा. Delta E is equal to NCV delta T. Delta H is equal to NCP delta T. These two expressions we have already written. Now they are derived like this, right? चलिए, very good. CP, molar heat capacity to constant pressure, D QP by NDT. What is QP? Del H, DH, small change, NDT. Therefore, DH is equal to NCP DT. Del H is equal to NCP del T. Large change, small change. अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनो. What is CV? Molar heat capacity. गौर से सुनिए. Molar heat capacity is defined as the amount of heat energy required supplied to increase temperature of 1 mole of body through 1 degree, that is equal to change of internal energy. एक ही जॉब हुआ है, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी. अब यहां पे आओ, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ बॉडी to through 1 degree, that is used to increase enthalpy. Sir, enthalpy का मतलब E plus PV. ओके, यहाँ दो काम हुए हैं. यहाँ एक हुआ इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रखने की वजह से, बिकॉज यू आर मेंटेनिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, यू आर अनेबल टू डू वर्क. Whatever energy you have been given, it is utilized completely to change the internal energy. Whereas if pressure is constant, whatever the amount of energy you have given, it has used for two jobs. Therefore, who should be more? CP should be more, right, than CV. अगर आप थोड़ा सा और अंदर सोचे, सर CP is more than CV, कितना ज्यादा होना चाहिए? दोनों का डिफरेंस. दोनों का डिफरेंस क्या था? एक में काम नहीं हुआ, एक में काम हुआ. इसका मतलब है CP minus CV should be equal to work done. Yes, let us try to understand that in different way. CV इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, CV is equal to DV by DE by DT. ये एक मोल की बात है, N निकाल दिया यहां से. CP is equal to DH by DT. What is DH? DE plus DV. अभी जो बोला मैं, एनर्जी भी होगी और वर्क भी होगा by DT. अब D इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूं, DE by DT प्लस P DV by DT. P DV by DT ये वर्क डन है. यस, CP माइनस CV इज इक्वल टू CP, ये पूरा लिखना, DE by DT प्लस P DV by DT माइनस CV D. व्हाट इज DE by DT? ये भी वही है, ये भी वही, प्लस माइनस कैंसिल, बच गया कौन? P DV by DT इज इक्वल टू, ये कौन है? सर ये तो हमारा पुराना दोस्त है, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर डिग्री पर मोल. कब की बात है? गैसियस स्टेट में डिफाइन करे थे. व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ R? R इज अमाउंट ऑफ वर्क डन पर डिग्री पर मोल. अब समझ में आया कि ओके सर, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर पर डिग्री पर मोल एट कांस्टेंट प्रेशर minus heat energy required to increase temperature of 1 mole per degree per mole at constant volume. दोनों का डिफरेंस जब निकालेंगे तो वर्क आएगा, उस वर्क को हम कहते हैं R. व्हाट इज R? अमाउंट ऑफ वर्क डन पर डिग्री पर मोल.
वर्क डन पर डिग्री पर मोल। अब स्पेसिफिक हीट रेशियो, ये तो खुला समझ में आ रहा है कि सर आप Cp by Cv की बात करें, यहाँ पे क्या करें, Cp minus Cv बोले। हु इज वाई इट इज सो, बिकॉज Cp इज मोर देन Cv। हाउ मच मोर, R टाइम्स प्लस R बोलेंगे। चलिए, स्पेसिफिक हीट रेशियो, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट, स्मॉल c, it is the amount of heat energy required to increase temperature of a gram of body through 1 degree, kilogram of body through 1 degree, इसको हम कहते हैं गामा। आप इसको फिजिक्स में पॉइसन्स रेशियो के नाम से जानते हैं, हम इसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट रेशियो। वी डोंट यूज दैट नेम। Gamma, what is gamma? Gamma is given as specific heat ratio of Cp and Cv. It indicates, what is significance of this, it indicates atomicity of gases. If you know the value of gamma, by knowing that you can understand whether the gas is monoatomic, diatomic or triatomic. Therefore मोलार हीट रेशियो, अब इसको अगर हम मोलार में बदलेंगे तो इसी की जगह कैपिटल सी लगाइए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए n से, इट बिकम्स n गामा। गामा इज फॉर 1 एंड हियर इन दिस केस वी आर हैविंग n मोल्स। 1.67 वैल्यू ऑफ गामा फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस, ये आपको याद रखना है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ज़ीनॉन, ऑल दिस 1.67 वैल्यू ऑफ गामा। व्हाट इज दैट, स्पेसिफिक हीट रेशियो। 1.4 for diatomic gases, hydrogen, oxygen, chlorine gases. Air, what is air, mixture of oxygen and nitrogen. Therefore we take diatomic, both of them. Therefore in problems, when you are doing air problem, you should take gamma value as 1.4, 1.33 for triatomic and polyatomic gases. Cp minus Cv is equal to R, right? Doctors, the last line is coming as 4 marks question. Derivation, देखिए कुछ भी नहीं है, बेकार चीज है, सिंपल है, समझ में आ सकता है। Only thing is the attitude, how we are trying to go that side. Cp minus Cv is equal to R, बात सही है। Divide throughout by Cv, Cp by Cv, Cv by Cv, R by Cv। ये Cp by Cv हो गया गामा, Cv by Cv हो गया 1, ये हो गया R by Cv, राइट। Cv को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, Cv is R by gamma minus 1, suitable for problems in case of doctors, suitable for advanced question in case of scientists. Okay, what is this? Monoatomic gases, diatomic gases and tripolyatomic gases. What is Cv? Cv is given, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये कैसा आया नहीं पूछना है, ये कैसा आया नहीं पूछना है। अब when you come to the degree classes, ये कैसा आया वो हम जब बताएंगे, आपको उधर आना नहीं है, आपकी फील्ड अलग है। Cv is 3R/2, ये R कौन, वही अपना पुराना दोस्त गैस कांस्टेंट। What is diat for monoatomic, Cv is 3R/2, ऐसे नीचे चलो। If it is 3R/2, what is Cp? C 3R/2 plus R। यहां से देखो Cp minus Cv is equal to R, so what is Cp, R plus Cv, तो इसमें R ऐड करो, ये बनेगा। गामा क्या होगा, 5/3, 1.67 कैसा आया, that I was explaining। Diatomic gases, Cv is 5R/2, Cp is 7R/2, gamma is 7/5, 1.4। and for triatomic, 3R, all you have to remember for problems, 3R Cp, 4R gamma, 4/3 Cp by Cv gamma, that is 1.33. Go ahead, write down that. I am continuing this one. If anybody is having any problem with respect to class to go to attend another class, I don't have any restriction, you can go. I am continuing the class to complete this today. At any cost, I think it will take up to 4 o'clock. But I am not forcing you. I am not forcing you. It's your choice. मेरा job मैं कर रहा हूँ. It's your choice. Go ahead. Write down. Write down. ये स्क्रीन पे जितना है उतना पूरा आपके माइंड में रहना है, अगर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंजॉय करना है तो। मोस्टली वी यूज गामा वैल्यू, सीपी, ये जो लिखे ना 3R/2, 5R/2, ये सब पूरे आपके जहन में रहना। Don't memorize, practice them, write it number of times. Use large amount of rough papers.
हाँ हाँ, लास्ट टाइम सिलेबस मेरा कंप्लीट करने का इरादा था बेटा, इसीलिए मैं हफ्ते के दिन क्लास रखा था। लेकिन आप हजरात की जो दोस्त है ना, खास हरदिल अजीज मुहज्जिब दोस्त, वो लोग आ गए थे क्लास में, इसलिए मेरी भी एक लिमिट है। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, एक लिमिट तक मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। This I have planned yesterday, last week only, but bad luck. You can fill the pot. You can fill the pot with water if the pot is not having holes. You are bringing a pot with large number of holes and crying that, sir, tap is not giving proper water. The terrific tragedy of Muslim community, irresponsible attitude. बाईपीसी डॉक्टर्स डेरिवेशन कैसा क्या टेंशन नहीं, कंक्लूजन, हमको सिर्फ कंक्लूजन होना है सर। ये जो बॉक्सेस में है ये कंक्लूजन से देखो, सीवी डी बाई डी टी, सीपी डी एच बाई डी टी, सीवी आर बाई गामा माइनस वन, राइट। लिखना तो सब है आपको नोट्स में, लेकिन कंक्लूजन जहन में रखो। ये टेबुलर फॉर्म पूरे का पूरा याद होना है तो प्रॉब्लम्स एंजॉय कर सकेंगे। डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए, डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए, एक क्वेश्चन लीक कर रहा हूं मैं कल का। whether you are talking whether you are talking about molar heat capacity capital C, specific heat capacity small c, क्वेश्चन देखो, specific heat capacity or molar heat capacity in case of isothermal processes is dash। फिर से सुनिए, molar heat capacity or specific heat capacity in case of isothermal processes is dash। Answer A positive, B negative, C 0, D infinity। ये है ब्यूटी। सर ये तो पढ़ाए नहीं कुछ भी, आप कैसा पूछ रहे हैं? ये हम सब पढ़ा दिए, सिर्फ समझना है, समझ का गेम है, राइट। Abrarullah is saying infinity, infinity, excellent, very good, genius students। इन थर्मल प्रोसेस आप बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, बिकॉज यू सेड आइसोथर्मल, देयरफॉर द आंसर इज इंफिनिटी, इंफिनिटी, ओके, इंफिनिटी। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं पलटा रहा हूं, देखिए, वैल्यू ऑफ मोलार हीट कैपेसिटी इन केस ऑफ अडियाबैटिक प्रोसेसेस इज डैश। आंसर पॉजिटिव, नेगेटिव, इंफिनिटी एंड जीरो। In case of adiabatic process is zero. Why? It is the amount of energy required। सर रिक्वायर्ड की बात कहाँ कर रहे हैं? adiabatic का मतलब क्यों जीरो? हाँ, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। और ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे? जब आप बैठेंगे, जब आपकी बैठक होगी दबा के, सर 2 घंटे आज थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हूँ, 2 घंटे फिजिक्स पढ़ा हूँ, तब ये सब चीजें बाहर आती हैं। आपके जहन में ये है, रहता है, लेकिन इसको निकालने के लिए डेडिकेशन चाहिए, इन्वॉल्वमेंट चाहिए। जीना कह के लिए है, पढ़ने के लिए, पढ़ना कह के लिए, जीने के लिए, बाकी सब बेकार चीजें हैं। दैट टाइप ऑफ एटीट्यूड शुड कम। शैल आई मूव? इज इट ओवर? यस, चलिए नेक्स्ट, लास्ट वन, बट ये थोड़ा सा बड़ा है। अब तक हम जो बात कर रहे थे आइसोथर्मल, आइसोथर्मल बोल रहे थे। अडियाबैटिक प्रोसेस में मुझको उसकी जरूरत है, किसकी? गामा की, इसलिए मैं पहले वो पढ़ा दिया। अब adiabatic process, very simple sir, q is equal to 0, right? If q is equal to 0, thermodynamics first law, delta E is equal to q plus w, delta E is equal to q plus w। What is delta E? Q 0 plus w, delta E is equal to w, very good।
work of expansion minus p external delta v. This is ready-made formula for us. Delta E, अभी थोड़ी देर पहले बोले थे, no sir, delta E is ncv delta t. ncv delta t, yes. Work of expansion adiabatic process is equal to ncv delta t. Why? When I am writing expansion, I am missing the word minus 9 नहीं लिख रहा हूं मैं. When I am writing like this, I am writing minus. चलिए अब एक्सप्रेशन देखो. By PC, sir, एकदम इतने चार एक्सप्रेशंस. Cool, nothing, simple. Work of expansion adiabatic is equal to minus p external delta v. ये तो हमारा फ्रेंड है, राइट. माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, v2 माइनस v1. ये एक एक्सप्रेशन को बढ़ा रहा हूं मैं, उधर दूसरा एक एक्सप्रेशन चल रहा है. क्या राइट में एनसीवी डेल्टा टी, एनसीवी डेल्टा टी सर फाइनल माइनस इनिशियल. सिंपल है, नर्सरी है सर ये तो. माइनस पी एक्सटर्नल वी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वी इज इक्वल टू एनआरटी बाई पी2. नो, एनआरटी2 बाई पी2. जरा पीछे जाइए, आइसोथर्मल में वहां भी ऐसी करे थे आप, लेकिन क्या करे थे, एनआरटी by P2 लिखे थे. Are you able to recall? NRT you have taken out. Here no sir, it changes. Why? Adiabatic process में cooling भी होगा, adiabatic process में expansion भी होगा, isothermal process heating भी होगा. Isothermal process में no heating, no cooling, therefore T constant. Therefore nRT2 by P2 minus nRT1 by P1 is equal to NCV T2 minus T1. थोड़ा सा इसको इधर उधर करिए. माइनस पी एक्सटर्नल NR आउट, T2 by P2 minus T1 by P1 is equal to NCV T2 minus T1. ठीक है, थोड़ा सा और एंजॉय कीजिए. ओके सर, we know that always P external, P2 is P external. Therefore, final expression is work of expansion in case of adiabatic processes. Which processes? Irreversible. सर लिखा हुआ नहीं है, नहीं लिखेगा. एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाएगा इरिवर्सिबल में कुछ नहीं लिखेगा, बिकॉज ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल. हाँ, जब क्वेश्चन रिवर्सिबल का बनना है, ही हैज टू मेंशन रिवर्सिबिलिटी, बिकॉज रिवर्सिबल प्रोसेस अपने आप से नहीं होते. यू शुड डू इट, राइट. irreversible सब अपने आप से, all natural processes are irreversible. Okay, so minus nr T2 minus T1 P2 by T1. I have taken common and NCV is equal to T2 minus T. Okay, work of expansion adiabatic NCV delta T एक फॉर्मूला है. अगर T के वैल्यूज दिया हुआ है तो ऐसा कर लीजिए. नहीं सर, अगर ऐसा वैल्यू दिया हुआ है, क्या गामा दिया हुआ है, तो एनसीवी थोड़ी देर पहले आपको डिराइव करे थे सीवी और गामा रिलेशन, वो यहां लिखा मैं, एनआर बाई गामा माइनस 1 T2 minus T1. You look at the problem. If he says for a diatomic gas temperature is increased from 25 to 45 degrees centigrade, if it is 0.1 mole, find the amount of work done. Go ahead with this formula. No sir, he has given the value of molar heat capacity. Go by this formula. Okay, T2 for adiabatic process. अब एक चीज जरा ध्यान से सुनिए. Sir, you are doing one simple mistake, I think. Some of you are saying, those who are sincerely involved, they say politely, sir, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं आप. क्या वहां पे क्या करे थे, आइसोथर्मल में एक हेडिंग बनाए थे आइसोथर्मल रिवर्सिबल की, एक हेडिंग बनाए थे आइसोथर्मल इरिवर्सिबल की. दो अलग अलग प्रोसेसेस हैं, दो अलग अलग पाथ है, राइट. यहाँ पे आप वो हेडिंग शायद भूल रहे हैं. यस, remember, I have not done a mistake. What is that? Remember. थोड़ा सा अजीब है सेंटेंस, गौर से सुनिए. The expression which I am writing, this expression, these three expressions which I am writing, all of these are applicable. All of these are applicable for both adiabatic reversible processes and irreversible processes. But अजीब व गरीब सेंटेंस है, but answer is different. क्या मैजिक है क्या? ऐसा कैसा होगा सर? एक्सप्रेशन सेम है, आंसर अलग होगा. यस, रिमेंबर, इन केस ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक फॉर्मूला है, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक अलग फॉर्मूला है. देयरफॉर वी आर गेटिंग टू आंसर्स क्वाइट completely clear, sir, crystal clear. But here you are saying something typical, sir. You are saying that for adiabatic reversible process, for adiabatic irreversible process, expression is same. You should same and use expression, but answer will be different. Why answer is different? Remember, when you start adiabatic process, you are starting at T1, initial state.
But when you end the process, roll number 1 is doing reversibly, roll number 2 is doing irreversibly, they will have different T2 value. T2 value अलग होगी. क्यों अलग होगी बाद में समझाऊंगा. अब क्या बोल रहा हूं, same expression is to be used for adiabatic reversible process, adiabatic irreversible process, expansion, compression, whatever it may be. But the answer for adiabatic reversible is different. The answer for adiabatic irreversible is different. Why? Because T2 value is different for these two processes, right? Okay, if T2 is different, how to understand the difference? T2 for adiabatic process. चलिए अब यहाँ समझाने के बाद कुछ लोग फिर से पूछेंगे अगेन, और आपको मालूम है मेरी बीमारी यह है कि मैं अगेन नहीं करता हूं, इसलिए ध्यान अभी से दीजिए. सिंपल है, बहुत सिंपल है. Expression to calculate work in adiabatic reversible and irreversible process is same, but magnitude of work differs due to difference in final temperature in both the processes. How it is different, sir? Okay, T1 is same for both. ये तो जरूरी है. R1 start, sorry, roll number 1, he is doing experiment. Temperature T1 25 डिग्री सेंटीग्रेड. रोल नंबर 2 टेम्परेचर T1. दोनों एक साथ काम शुरू करें, लेकिन वन इज बाय adiabatic reversible, another is doing by adiabatic irreversible. चलिए, इन केस ऑफ adiabatic reversible expansion, अब जरा ध्यान से सुनिए, इसको हटा देता हूं मैं. If suppose you are doing reversible process, we have already learned just now, reversible में expansion की बात कर रहा हूं. reversible में काम ज्यादा होगा, इरिवर्सिबल पे काम कम होगा. अब पहले कॉमन एग्जांपल आपकी लाइफ में से ले रहा हूं, वो समझ जाइए, फिर हम साइंस की तरफ आएंगे. रोल नंबर 1, राइट, खाना नहीं खाए. रोल नंबर 2 खाना नहीं खाए, मतलब Q इज इक्वल टू 0. बोथ ऑफ दे आर डूइंग वर्क. चलिए, रोल नंबर 1 रिवर्सिबल adiabatic वर्क, रोल नंबर 2 इरिवर्सिबल adiabatic वर्क. बोलिए कौन ज्यादा काम करेगा? सर, रिवर्सिबल एक्सपेंशन वाला काम ज्यादा करता है. ठीक है, काम ज्यादा करेगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा यूटिलाइज होगी, बिकॉज ही इज डूइंग वर्क एट द एक्सपेंस ऑफ हिज ओन एनर्जी, बिकॉज ही हैज नॉट टेकन ब्रेकफास्ट, ही हैज नॉट टेकन लंच. T2 is also not taken lunch and breakfast, but he's doing work, but he's doing less amount of work. Why? Process is irreversible. जो काम कम करेगा उसकी एनर्जी कम घटेगी. दोनों की एनर्जी सुबह में जब स्टार्ट करे प्रोसेस कितनी थी? 1000 joules. Right? Rule number 1, he has done the job without taking breakfast and lunch. He has done the job, and here he suppose, for example, final energy of that fellow is 1000 to 100. Why? He has done so much amount of work. Rule number 2, I am checking how much work you have done. Sir, I have done some work, but I have done in irreversible manner. Therefore, available energy with me at 5 p.m. is 1000 was available. Now it is 500. बात समझ में आ रही? 500 वाला टेम्परेचर ज्यादा होगा, T2, और 100 वाले का टेम्परेचर T2 कम होगा. इसका मतलब है T1 is same for both of them, but since roll number 1 is doing adiabatic reversible process, that agent has to do more amount of work because it is reversible expansion. More amount of work means he has to use more of its own available energy. Therefore, left out energy will be less. Definitely at the evening थका हुआ रहेगा, सर मेरी एनर्जी बहुत यूटिलाइज हो चुकी है, लिहाजा मेरा टेम्परेचर कम होगा. T2 will be less. ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, नीट में भी आएगा, कल भी आ रहा है. T1 is same for both. ठीक है. In case of adiabatic reversible expansion, amount of work done is maximum. Greater decrease in internal energy. जितना ज्यादा काम करेंगे, कहां से काम कर रहे हैं? सर मेरी अपनी ओन एनर्जी से कर रहा हूं, बाहर से कुछ नहीं लिया. Therefore, more decrease in temperature. More decrease in temperature. Doctors, ये 4 मार्क्स में चले गया. More decrease in temperature. T2 adiabatic reversible expansion is always less, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत कम होगी, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी. वहां शुरू करे थे आप कहां पे? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे. ये बेचारा पहुंच जाएगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड 15 पे, इन्हें रहेगा 20, 22, 23 के ऊपर, बिकॉज ही हैज डन लेस अमाउंट ऑफ वर्क. डेल्टा टीटी, ये 4 मार्क्स, ये 4 मार्क्स, राइट, 12 मार्क्स एक पैराग्राफ बनेगा. T2 adiabatic reversible expansion less,
T2 adiabatic irreversible because work done is more. डेल्टा T is large. अब ये देखो, अगर 25 से 5 आया है तो चेंज कितना होगा, ज्यादा होगा. किसमें चेंज ज्यादा होगा, रिवर्सिबल में चेंज ज्यादा होगा. ये सिंबल लेस है, ये मोर है. चेंज इन टेम्परेचर इज मोर इन केस ऑफ रिवर्सिबल adiabatic एक्सपेंशन. चेंज इन टेम्परेचर लेस. 25 से 22 को आगे रुक गया है. ठीक है, राइट. The same thing I can explain in this manner also. ये T1 है जहां आप काम शुरू करें. ओके, घट गया टेम्परेचर. कितना घटा सर, यहां तक आ गया. कौन है, शायद रोल नंबर 1 होगा, देखेंगे अभी मालूम होगा. अच्छा, T2 फॉर रिवर्सिबल adiabatic, मतलब ये रोल नंबर 1 है, बहुत ज्यादा घट गया. अब रोल नंबर 2 वाला आने वाला है. ओके, इतना इतना घटा है. ये कौन है, T2 फॉर इरिवर्सिबल adiabatic. देखो, ये ज्यादा टेम्परेचर है T2, ये कम टेम्परेचर है. सर डिफरेंस ये ज्यादा है, ये कम है. इज इट क्लियर? टेक डाउन दैट. गो अहेड. थोड़ा सा तेज चलिए, और एक स्लाइड है शायद, देन आई विल पैक इट अप. You can enjoy tomorrow these questions if you read these things today. Those who want to leave the class, no problem. Go ahead. This is the beautiful part of the thermodynamics first law, where people enjoy the score. Yes, everything must be there. जो blocks बना रहा हूं मैं, पूरे के पूरे आपके दिमाग में safe and sound. It all nothing, कोई difficult task नहीं. It all practice. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा परफेक्शन आएगा. Yes, tomorrow we have all physical chemistry. Enjoy the physical chemistry tomorrow. 45 questions, beautiful thermodynamics, and whole thing till today's last sentence. Shall I proceed? Done. Come on, चलिए. very good, nice. अब क्वेश्चन आपका फाइनली लास्ट क्या होगा. ठीक है सर, आप बोल रहे हैं T2 अलग है, इसलिए आंसर अलग होगा. फॉर्मूला सेम है, मैजिक नहीं है. इट्स अ साइंस. In case of adiabatic reversible expansion, adiabatic irreversible expansion, formula is same, but answer is different. How it comes? It comes because of T2. T2 is different. चलो ये भी समझ में आ गया T2 क्यों डिफरेंट है. ठीक है, T2 की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे. T2 फॉर adiabatic irreversible के लिए अलग फॉर्मूला होगा, रिवर्सिबल के लिए अलग फॉर्मूला होगा. अब यहाँ पे जो डॉक्टर्स है, डेरिवेशन के ऊपर ध्यान मत दीजिए. फाइनल इक्वेशंस याद रखना जरूरी है. W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल. ये सब घूम घाम के डेरिवेशन करने के बाद एनपीसी वाले घर में बैठिए, एंजॉय कीजिए. एक्सप्लेन एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन इन द प्रॉपर वे. सिंपली मैं यहाँ तक तो मैं करा दिया पिछली क्लास में. ये पिछली स्लाइड पे ये सब है, ये मैं यहाँ से अल्टरनेट करके लाया हूँ. ये याद रखना है दोनों को, आईआईटी वालों को और डॉक्टर्स को. राइट, फाइनल टेम्परेचर इज दिस वन इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेसेस. ठीक है, टेंशन मत लीजिए.
फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस यहाँ पे और आपका पसीना निकलने का चांस है। एक ये याद रखो, बस ये याद रखो, लास्ट में जो आ रहा है वो याद रखो। एमपीसी स्टूडेंट्स डेरिवेशन पे ध्यान दीजिए, राइट। आपको कोई पूछेगा नहीं, किसी की मजाल नहीं है आपको डिराइव करो बोलने की, लेकिन समझेंगे तो फायदे में रहेंगे। दिस इज ऑल रिलेशंस डॉक्टर्स। ये जो कलर्ड ब्लॉक्सेस हैं ये आपके लिए गिफ्ट है, बाकी सब अननेसेसरी है, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। और इस चार्ट को लिखो मत, इसका स्लाइड स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ये है इरिवर्सिबल के लिए। ये रिवर्सिबल में 3 फॉर्मूले हैं। जहां गामा आया रिवर्सिबल, याद रखिए ट्रिक। जहां गामा आ गया पीवीटी के साथ वो है रिवर्सिबल। जहां बेचारा गामा एब्सेंट है वो है reversible adiabatic process. Take screenshot of this. Doctors, derivations not necessary. Conclusions must and should be there in your mind, not notebook, mind. Is it over? You have taken screenshot. Shall I proceed? I think it's over now. शायद हो चुका है content. Shall I proceed? बस काफी है, इतना काफी है आज के लिए, इतना काफी है। इसके बाद एक चीज है जो रिक्वायर्ड, इसके लिए टाइम देना पड़ेगा, वो बाद में करेंगे। वी हैव वन मोर, राइट। हियर वी विल स्टॉप। यू आर हैविंग क्लास फ्रॉम 4 o'clock, प्लीज गो एंड एंजॉय। एंड टुमारो वी आर हैविंग टेस्ट ओनली फिजिकल केमिस्ट्री। कृष्ण मोहन सर की तबीयत अभी संभली नहीं है, विल डिस्कस इट टिल हियर ऑफ कोर्स, टिल हियर। आगे कोई क्वेश्चंस आए तो उसको आप सैक्रिफाइस कर दो। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। वही